So guys, here we are going to start a new chapter of unit human physiology, and that is chapter number 17, breathing and exchange of gases. And here today we will be talking about a short topic of what is respiration, what are its types, which respiratory organs are present in different animals, and respiratory system. So let us begin with the we all know that we require oxygen, right? हमें ऑक्सीजन की हमेशा जरूरत पड़ती है मेटाबॉलिज्म के लिए या फिर किसी चीज के ब्रेकडाउन के लिए. जनरली क्या चीज ब्रेकडाउन होती है? तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है. जैसे कि here I have given you the example for the breakdown of molecules like glucose. अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर होता है थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, तो हियर वन इंपॉर्टेंट सीक्वेंस इज गिवन, ये याद रखना कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से रेस्पिरेटरी सिस्टम से रहकर इट गोज टू द ब्लड. ब्लड डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं होता. देयर इज अ मीडिएटर, वी कॉल इट एज लिम्फ. फिर ऑक्सीजन लिम्फ में जाता है, देन इट गोज टू द सेल्स. अब सेल्स वो ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को ब्रेक करता है और उसके वेस्ट प्रोडक्ट में दो चीजें बनती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या बनती है? द वन थिंग दैट इज फॉर्म इज एटीपी. तो एटीपी तो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, एटीपी इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. लेकिन दो चीजें होती है जो वेस्ट बनती है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी यूज. एटीपी का हम यूज कर लेते हैं. एटीपी, दिस इज पी, रिमेंबर. ओके, दिस इज पी. तो एटीपी का तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन ये चीजों को रिमूव करना पड़ता है. तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वापस यही पाथवे से सेल से होके लिम्स, लिम्स से लेके ब्लड, और ब्लड से होके रेस्पिरेटरी सिस्टम से वापस CO2 कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में. तो हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दैट इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल in the exchange of gases between the body and the atmosphere, right? So ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम कहते हैं respiration. So now let us understand what is the different levels of respiration, या फिर हम कहें कि what is the difference between breathing and respiration. So अगर simply intake of oxygen and removal of carbon dioxide है, fresh air नहीं better है, हम यहाँ पे oxygen लिखें, and removal of fall air मतलब unwanted air, that is carbon dioxide अगर हम कहते हैं, okay, तो that is what you call it as breathing. लेकिन ऑक्सीजन का यूज करके what you can say कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो बनता है सेल लेवल पे, so that is what you call it as respiration. Now here it is a physical process, whereas respiration is a biochemical process. It requires enzymes and many more things to break down the glucose. Further over here, no energy is released in respiration. No energy is breathing में कोई energy release नहीं होती. But when we talk about respiration, you can say that yes, energy is released in the form of ATP. When you talk about this breathing, it is an extracellular process. मतलब सेल के अंदर नहीं होता, ये organ level पे होता है, ठीक है. It is taking place at organ or you can say tissue level. But when you talk about respiration, ये सेल के अंदर होता है, so you can call it as in between cells or inside the cell. It is known as intracellular process. Okay, so cell level पे होता है. So this is the difference between what is breathing and what is respiration. Further, if we talk about certain respiratory organs present in different animals, so in the chapter 4, we have already studied that what kind of respiratory organs different organism, different phylum has. So first, if we talk about the entire body, मतलब कौन स्किन से रेस्पायर करता है एंटायर बॉडी से, तो देयर कम स्पॉन्जेस, that is poriferas, flatworms, that is platyhelminths, and coelenterate. If we talk about cutaneous respiration, that is through the skin, cutaneous respiration, it is earthworm. You can say Annelida. Then tracheal system, like book lungs, book gills. You can consider here insects, that is arthropoda. And when you talk about gills, you can include it as
फिशेज एंड एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो मेरीन या फिर पानी में जो होते हैं वो गिल्स से रेस्पायर करते हैं, इंसेक्ट्स। ओके, फर्दर अगर लंग्स की हम बात करें तो इट इज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, दे ऑल respire through the lungs. So we are going to talk about here a human respiratory system. Now if you'll see, this is the diagram that is given in your textbook. So whenever it is asked, you have to draw this diagram. So here it is given through epiglottis, larynx, trachea, right? Which leads to bronchus, and that leads to lungs. So these are the main structures. That is what you need to consider, okay, in the respiratory system. Furthermore, अगर हम ये सब की बात करें तो ये तो lungs के अंदर आता है, तो that is what we are going to see later on. And we also know that lungs are supported on diaphragm and in the rib cage. ठीक है, तो लेकिन आइडियली अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो what is it comprising? It is comprising of a pair of nostrils जो nose के अंदर included है, which leads to pharynx, that leads to larynx, which leads to trachea, that leads to bronchi, and that leads to lungs. तो ये पूरा एक सीक्वेंस है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का. The human respiratory system consists of pair of nostrils, that is nose, pharynx, which leads to larynx. It leads to larynx का मतलब होता है voice box. pharynx वो है जो जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि फूड और एयर का एक कॉमन पैसेज है. ब्रोंकाई से होता है lungs. तो हमें इंडिविजुअली ये सारे ऑर्गन्स को पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में. You can see that the first part and this portion is nose, ठीक है, which leads to inside, that is nasal cavity, that leads to pharynx, that leads to larynx, that leads to trachea, and trachea leads to bronchus, and that leads to lungs. ये जो pleura दिया है, pleura is a covering of lungs, so you do not have to consider here. Then alveoli is present in the lungs, and diaphragm is a structure that supports the lungs. So this is ideally the diagram of a respiratory system of humans. So first let's talk about the nose. We all know what is nose. The anterior tip portion of the nose is known as nose tip, that is made up of elastic cartilage. There is a one single what you can say, this is nose एक single organ है जो हमारे face पे से बाहर निकलता हुआ एक structure है, jutting out portion है, and it is having a nasal septa. तो ये जो पूरा structure हमें दिखाई देता है जो nose को दो part में divide कर देता है, that is what you call it as nasal septa. ये अंदर भी होता है. And it divides the nasal septa into two parts, that is what you call it as nasal cavity or nasal chamber. Okay, so let us start. So there are two holes in it that is separated by a nasal septa, and these two holes are called nostrils, which leads to a cavity called nasal chamber or nasal cavity. इसके अंदर hairs होते हैं और mucus होते हैं, मतलब over here in the nasal cavity there are hairs and mucus so that it can filters the air, या तो फिर जो कुछ भी impurities होती है वो वहां पे hairs trap कर लेते हैं mucus, ताकि air lungs के अंदर clean air जाए. And the function of यहाँ का function क्या है, air को inhale करना nostrils और nasal cavity के through. So this is the function of nose. फर्दर ये जो स्लाइड है ये सिर्फ नीट वालों के लिए है, तो नीट वाले इस पर ध्यान दें, ओनली फॉर द रेफरेंस ऑफ द नीट स्टूडेंट्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ nasal cavity, so there are three main parts of the nasal cavity. The first is called as vestibule, जो lower portion है. The second is the region called respiratory region, and the third region is called as the olfactory region. So let's talk first about
the lower vestibule. Vestibule मतलब opening area. You can see that this is a vestibular area जहाँ पे आपको fine छोटे छोटे hairs दिख रहे हैं and mucus. The function of this vestibular area is to filter the air so that the pure like impurities बाहर रह जाएं और अच्छी air अंदर enter हो. Middle portion, you can see this is a red portion over here, and this is what you call it as the respiratory region. It is highly vascular और ये region से होके enter होते हैं हम nasopharynx पे. So if it is asked that which region of the nasal cavity leads to the nasopharynx, then you need to remember that it is the respiratory region. ये ऑडिटरी ट्यूब का ओपनिंग है जिसे यहाँ पे ना भी कंसिडर करें तो चलेगा, लेकिन रिमेंबर दैट इट इज द वन व्हाट यू कॉल इट एज द स्टैचियन अपर्चर. तो वो फेरिंग्स एयर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि हमारे ईयर के अंदर एयर प्रेशर बना रहे हैं. तो ये तो हम लेटर ऑन भी पढ़ सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इज एन स्टैचियन अपर्चर. तो ये वो स्टैचियन अपर्चर है जिसकी वजह से हमारे ईयर के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे एयर प्रेशर बना रहता है. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ईयर. You just remember that the respiratory region leads to the nasopharynx. Further अगर हम बात करें तो the third region is known as the olfactory region. इसके पास एक typical kind of epithelium है जिसे हम कहते हैं Schneiderian epithelium, जिसमें से nerves निकलती है. The nerves goes up this way. Okay, और यहाँ पे होता है olfactory area of the brain. और वो olfactory area is responsible for the smell of sensation of smell, olfaction. तो हमें क्यों एयर को स्मेल करने की जरूरत पड़ती है? बिकॉज अगर फाउल एयर है, कंटेजियस एयर है, तो हमारा ब्रीदिंग स्टॉप हो जाता है थोड़े टाइम के लिए. हम पता है हम खुद ब्रीथ को होल्ड कर देते हैं ताकि हम गंदी एयर हमारी बॉडी में ना डालें. So this olfactory region is responsible again for the determining the quality of air by the smell. Further अगर हम बात करें तो there is one bony structure present in the ये parts of nasal cavity में आप तीन ही consider करना. The first is known as vestibule, the second is known as the respiratory region, and the third is known as the olfactory. Further इसके अंदर bony part है. That is what you call it as concave. So it is a bony part in the respiratory area, and this bony part is responsible for the passage of air. ये पूरा curved जो आपको यहाँ पे passage, ये जो पूरा curved दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला area, right? This is what you call it as nasal concave, and it helps in maintaining the air temperature. तो ये हमारे नाक में रहा है एक AC जैसा structure, air conditioning structure that regulates the air temperature. So you just need to, only NEET students can refer this, that these are the parts of nasal cavity. You have to make notes of this, what we can say, सभी बच्चों को इसकी notes भी बनानी है और ये सब कुछ book के अंदर लिखना भी है. So this was all about today's lecture in which we studied detail about nose, nasal cavity and the parts of nasal cavity. Now further, in the next lecture, we will be talking about pharynx and trachea in detail.